Hello, everyone. Today we are going to start yet another very interesting and exciting chapter, which has a lot of value. Value in the sense that it has more weightage. Every year, JEE asks close to 7, 8 questions. And also it has references in other few questions as well. So collectively, it has value around 10 questions. And plus, it has another significance that it raises our thought process. Calculus is one such thing which you are going to study inside JEE as well, right from your first semester. So calculus is going to be helpful in a lot of ways. Plus, calculus has one more thing that calculus is more or less drawn on graph. And of course, we will draw the calculus other ways as well. We'll solve other ways as well. But more importantly, we have a lot of significance as in it can be drawn on graph as well. So if you can visualize things on graph and if you can interpret it on a graph, it means your thought process has gone up, which means that you can see those things in the question which generally are hidden by IIT or any other standard examination. They hide those things. They want you to analyze and then bring out those things out of the questions. So in both the ways, calculus is a very important topic. There would be at least like 10, 15, maybe more than that videos on calculus. So we'll start with functions. We'll learn basics about function. We'll learn something that we should know before function, before entering into function. And then we'll jump to function. We'll see various aspects of function. After function, we'll see limits, continuity, and not limit. After function, we'll study ITF, limit, continuity, methods of differentiation, integration, area under curves, and various other topics we'll be covering. Just one thing I'd like to tell you over here in this particular chapter, that calculus is roughly divided into 14 chapters, out of which four of the chapters are very, very basics. So if you miss out on these 4 chapters, like functions, you have ITF, you have limits, and indefinite integration. If you miss out on these 4 chapters, then the rest of the remaining 10 chapters is going to be very tough for you. I would recommend then you don't do it. Better you go for physics and chemistry, better you work onto that. But if you have completed these 4 chapters, if you have given a lot of time on these 4 chapters, then rest of the 10 chapters is going to be a cakewalk for you. That's what I can tell you. So again, it's more that these 4 chapters we'll study in great depth, and we'll use the application that we would have studied in these 4 chapters in the upcoming 10 chapter. Then you will see that calculus is very, very easy. Okay. So enough of Gyan. Let's begin. Okay. So we'll start with functions today, and then we'll move on. Okay. Let's begin. So calculus, basically we have to define calculus. Calculus is nothing, it's just study of different aspects of a function. Various behavior patterns of function. That's what we study in calculus. Okay. So before we jump into function, we should know small concepts which we have studied before and which we'll study again in great details. So first is set. So when I ask most of my students, what is set? So very fine, they would answer, most of us would answer. In fact, you can think what is set and you can type in the comment box that set is a collection of objects. That's what most of us would prefer, a definition, a small and crisp definition of set. But this definition is a lot of ambiguity, that collection of objects. So what sort of collection we're talking about? Okay, so this is not the right definition of set. In fact, the definition should be like this. Set is any collection of well-defined objects. Well-defined is very, very important. Just for an example, okay, let's say if I say collection of intelligent students, collection of tall students. See, both of these seems to be as a collection, but in fact, these are not well defined. So we won't consider these as sets, but these two can be made set if you define what sort of collection we are talking about. So let's see if I mark it collection of students with more
than 80% marks in, let's say, JEE, maybe anything, or collection of students more than, let's say, 5, 10 feet. So now defining, we have tried defining our collection. So that is primarily a set now. Okay. So this was about set. Now there are many ways to define a set. We can define set primarily in two ways. So the first one is set listing method. This is not much used in terms of JEE preparation. Maybe in NCERT, in CBSE, it can be used, but not with respect to JEE preparation. But yeah, the second one, set builder method. This is great significance because almost all the questions are asked in this pattern. Okay, but we'll study both. Set listing method, mein what you do, you just directly make the list of elements. Directly present the elements belonging to the set. So for an example, or let me write this and then I'll give the example. Over here, we don't disclose the elements, but their properties. Okay. So let's say if I have to write a set of a natural number. Okay. Let's say my set is a natural number up to 6, for example. So in set listing method, I'll straight away go ahead and write all the elements. Okay. I can say 1 belongs to A, 2 belongs to all these elements. This sign belongs to, it says belongs to, 4 belongs to A, and etc. But in set builder method, we said that we are not going to disclose the elements. हम बताएंगे नहीं कि क्या-क्या element है, but we'll write their properties. ठीक है? We'll give some description of what we are going to present. So we'll say X such that, now this vertical line means is such that. Now X is such that X is a natural number and X is less than 6. Now you can see it's the same thing. There's not much difference amongst the two methods in terms of the final output, but the way we have presented, it matters the most. Okay, so this is what this is what JEE would love. So we'll practice more and more in the upcoming questions. Okay. Now, this is where we'll stop studying set now. We'll study set as an individual chapter once we have completed function calculus, or maybe when we'll start algebra. Okay, for the time being, we'll stop over here. Now, second thing that we should study before we jump on to understanding of function, we should know what is a relation. Okay. So relation is any rule. It can be any rule which relates the elements of one set to elements of other set. Okay. Now it is written as, if I have to write a relation, it is written as, now this semicolon that you see over here, it says defined from. Okay. Now, so we'll take some examples and then we'll see many other things which are related to relation, and then we'll go for understanding function. So let's set a rule, and this rule we'll use, this example we'll use for upcoming 8-10 examples. Okay. So the rule is join each element with their square. Okay. So we'll take two sets and we'll use this formula everywhere. This is 1 and this is 2. This is 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Now, so what is the rule? The rule is that we are going to join each element with a square. So 1 ka square is 1 and 2 ka square is 4. Okay. Now understand. From here, we'll know what is codomain. So in relation defined from A to B, entire set B is codomain. Entire set B. Simple as that. Okay. No exclusion, no nothing. Unless given, entire set B is codomain. The second thing is domain. Now, this is very important. Most of us would think the entire set is domain. Okay. ऐसा बहुतों को लगता है कि entire set domain है, जबकि ऐसा नहीं है. ठीक है. So, all the elements of A which are connected to set B are called domains. Now, very important thing is which are connected. ठीक है. Which are connected. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ठीक है, so not every element of set A is connected. So entire set A, I'm just making a star mark because this will bring us to some contradictions when we go for studying functions. So I'm just making star mark over here. So entire set A is not the domain, but only the linked elements. Okay, so यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 and 2 हो जाएगा. ठीक है. Now, third important thing जो हमें जानना चाहिए, that is range. Again, entire set B is not the range. Okay, so in relation defined from A to B, all the elements of set B which are connected to set A are called range. ठीक है. जैसे कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो 1 और 4 होगा. ठीक है. तो उम्मीद है आपको भी हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है. We are using a rule. The rule is that we are joining each element with a square. So this is primarily, you can understand, you can have a feel ki what actually codomain, domain and range are. Okay. So now these three things will be used in across the calculus and in fact in other chapters as well. So it's very important. Now we'll start with function. So let's first define what is a function. So देखो, relation क्या था? Relation is a rule. So what is a function? Function is a relation. Very important. Function is a relation in which every element of set A gets related to exactly one element of set B. And how is it written? जैसे हम relation को लिखते थे, we can write function. ठीक है? This is how it is written. Now, again, we'll read function's definition once again. Function is a relation in which every element of set A gets related to exactly one element of set B. तो अगर आपको function देखना है, function पहचानना है, so you have to basically observe set A. If you see that all the elements of set A are related, set A में कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है, तब वो function होगा. अगर set A में कोई भी element रह रहा है, तो वो नहीं होगा function. That's the key thing. Okay. Now again, we'll use the same example that we have been using. So we'll take some examples. We'll take some examples over here.
Okay. So let's say 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, 16, 25, 36. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, 36. 1, 2, 3, 4. We can say 1, 4, 9, 16. Minus 1, 1, minus 2, 2. There is 1, 2, 3, 4. So we have taken 4 cases over here so that we can understand the concept of function. In fact, identifying function very easily. Okay, so we can break up the definition in more mathematical way. ठीक, 4 एग्जाम्पल ले लिए, 4 केस ले लिए. ठीक, अभी देखो. Again, rule वही है. We are joining with the elements of one set to the square in the second set. Okay, we are joining each element with their square. Okay, so now over here, let's say 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया. Okay, now side by side, what we are doing, we'll write their domain and range. Okay, I would need you guys to think before I disclose. I need you to think कि क्या होगा domain, क्या range, चारों के cases में. ठीक है, domain and range domain and range. ठीक है, now अब भैया 1, 4, 9. ठीक है, थर्ड केस में देखते हैं 1, 4, 9, 16. guys, we are joining with the square element of one set को हम उनके स्क्वायर से दूसरे सेट में कनेक्ट कर रहे हैं. रूल ये है. ओके, सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 है. नाउ ओवर हियर this is very important, so let me take it in red. Okay, now we'll check if it is a function first for all the 4 cases and then we'll decide codomain range क्या होगा इनका. तो देखो definition क्या कहता है function का. Definition says all the elements of set A gets related. So पहला चीज, क्या एक सेट में सारे रिलेटेड हैं? हाँ जी, रिलेटेड हैं. नाउ रिलेटेड टू व्हाट? टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. देखो 1 is related to 1, 2 is related to 4, 3 is related to 9. So we can say 1 is related to 1, 2 related to 4, 3 related to 9, 4 related to 16. Yes, but then there are certain elements which are left over. यहाँ देखो B में there are certain elements which are not connected. ये बच जा रहा है. ठीक है, इस पे बाद में आते हैं. इसमें चलते हैं केस 2 में. क्या ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिंक्ड है? नहीं. इफ there's anything that is left behind in set A, it is not a function. So straight away we can say this is not a function. Okay, केस 3 में चलते हैं. क्या लिंक्ड है? हाँ. क्या एक से एक लिंक्ड है? yes, we can say 1 is linked only to 1, 2 is linked only to 4, 3 is only linked to 9 and 4 is only linked to 16. So it satisfies all the categories. So yes, this is a function. Case 1 is also a function. Now case 4 पे हम आते हैं. So over here देखो, इसको देखने का नजरिया होना चाहिए. It may look that although all the elements of set A is linked, but you may find or you may think that it is linked to multiple items, but it's not as such. देखो -1 तो 1 से लिंक्ड है. ठीक है, 1 जो है वो भी 1 से लिंक्ड है. So I'll make a copy of it over here and so that it is easier for you guys to understand what I'm trying to tell you. Let's say 1, 2, 3, 4 हो और A, B, C, D हो. So केस 4 एक अलग केस है ना. सी इफ 1, 2, both the cases, let's say case 4 and this is 4.1, these are two different cases. In case 4, -1, all the elements of A is linked only to one item of set B, only to one element of set B. देखो, but in 4.1, elements of set A is linked to more than one. देखो 1 से ही 1 का रिश्ता जा रहा है, 1 से ही B, A का B का भी जा रहा है.
2 से C का जा रहा है, 2 से D का जा रहा है, हम 3 को भी बना सकते हैं, 3 से B को जा रहा है, 3 से फिर से D को जा रहा है. So this is not a function because it is very well said in the definition कि only one element sorry exactly one element से रिश्ता होना चाहिए. ठीक है, so this is not a function, so this will help you differentiate. So this is also function, case 4 is also function. So now अब हम डोमेन की बात करते हैं. So अगर हम डोमेन की बात करें, so entire set A, entire, again I'm making a star mark क्योंकि मैंने ऊपर बोला था कि entire set A is not the domain. Okay, so I'll come on to that. For the time being, entire set A is the domain and range 1 4 9 16. देखो जहां पे फंक्शन ही नहीं है, this is a relation, this is not a function. Why? Because all the elements of set A is not linked. So if all the elements of set A is not linked, we can very well say that it is just another relation but not a function. केस 3 में आते हैं एकदम. यस, सब है. वी कैन अगेन डोमेन तो एंटायर सेट ए हो जाएगा, आंख बंद करके लिख लो. ओवर हियर एंटायर सेट बी ही हमारा रेंज होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं. एंड अगेन केस यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डोमेन देखो एंटायर सेट ए डोमेन है और रेंज क्या है हमारा, रेंज 1 and 4 है. ठीक है, अब उन कॉन्ट्राडिक्शंस पे आते हैं जिसकी हम पहले बात कर रहे थे. ठीक है, तो पहले हमने रिलेशन में पढ़ा, इन रिलेशन वी स्टडीड दैट नॉट एंटायर सेट, नॉट एंटायर सेट ए इज डोमेन. दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन रिलेशन. ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था रिलेशन में इसके साथ, ओनली द लिंक्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डोमेन, है ना, हमने ये पढ़ा था. सी डेफिनेशन इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि सर्कमस्टेंसेस देके डेफिनेशन चेंज होगा, इट वुड बी द सेम. देखो फंक्शन में बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज टू बी लिंक्ड. ठीक है, सिर्फ ऑल द एलिमेंट्स आर लिंक्ड, इट मींस व्हाट, एंटायर सेट ही डोमेन बन गया ना, क्योंकि हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था, जो लिंक्ड होगा वही डोमेन बनेगा. तो लिंक्ड कितने हो रहे हैं, सेट में सारे ही हो रहे हैं. जब सारे ही हो रहे हैं तो पूरा सेट ए ही बन जाएगा. ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन, इट फॉलोज द सेम पैटर्न. इन रिलेशन में क्या था कि नॉट एवरी एलिमेंट वाज गेटिंग कनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई वी सेड ओनली द कनेक्टेड एलिमेंट्स. ओवर हियर फंक्शन की पहली क्राइटेरिया यही है कि इट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज टू बी लिंक्ड. सो दैट मेक्स फंक्शन का डोमेन एंटायर सेट ए. ठीक है, that's what it is. Now there are certain ambiguities in definition. ठीक है, there are certain ambiguities in function definition. function की definition में कुछ कुछ कमियां हैं. क्या पहला कि although it talks everything about set A, all the elements of set A has to be connected to exactly one element of set B, nothing has been said about सेट बी. सेट बी के बारे में कुछ भी ऐसे नहीं बताया गया कि सेट बी में क्या होना चाहिए, सेट बी की बिहेवियर क्या होना चाहिए. देयर इज नथिंग एज सच गिवन. ओके, so since nothing has been said about set b, see what inferences can be made. We'll go up again over here. देखो सेट बी में कुछ एलिमेंट्स बाकी रह रहे हैं तब भी फंक्शन है, सेट बी में कोई एलिमेंट्स बाकी नहीं रह रहा है तब भी वो फंक्शन है. फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा सेट ए से ही होगा. अब सेट बी में अगर बाकी रह रहा है तो हम उससे क्या सीखेंगे, और नहीं बाकी रह रहा है तो हम क्या सीखेंगे, और सेट बी के मल्टीपल रिलेशंस हैं सेट ए से तो हम क्या सीखेंगे. ओके, आते हैं सेकंड. दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल्दो इट सेज दैट सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, बट अगेन देयर इज नो लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन सेट बी. देयर इज नो लिमिटेशन कि सेट बी के एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स सेट ए के साथ वो कनेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है. सो इससे दो हमें फायदे मिलेंगे. इनफैक्ट देखो ऑल द एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, all the elements, or in fact a set B, if you talk about set B where elements are left behind to be connected,
उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शंस। जहां पे भी सेट बी के एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं हम उनको बोलते हैं इनटू फंक्शन। जहां पे बाकी नहीं रहते हैं सेट बी में, वी कॉल इट एज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सेट बी में रह जा रहा है तो इनटू हो गया, नहीं रह रहा है तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, जहां पे जहां पे एक से एक का रिश्ता हो, वेयर एलिमेंट ऑफ सेट बी, ध्यान से आई एम टेलिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट ए। सेट ए आपने तभी, एक ही काम है सेट ए का, टू वेरीफाई इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट। उसके बाद आपने सेट ए को देखना भी है, जस्ट फोकस ऑन सेट बी, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम सेट बी। फ्रॉम देन सेट बी, if there's something left behind in set B, into if there's nothing left behind in set B, we call it as an onto function. If all the elements of set B is related to only one element of set A, if all the elements of set B के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट, एक एक एलिमेंट सेट A से कनेक्टेड हैं, तो हम इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। और इस केस में, केस 4 में अगर हम आ जाए, सो सी each, like we have two elements of set B which are connected to multiple elements of set B. So जब भी ऐसा रिश्ता बनता है तो हम बोलते हैं many one। ओके, ओके, देखो इससे हमें क्लासिफिकेशन मिल गया, क्योंकि देयर हैज बीन सम एम्बिग्यूटीज, उससे हमें कुछ कुछ पता लग गया। अच्छा, इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो विल डिस्कस दोस थिंग। सो इनटू फंक्शंस एंड ऑनटू फंक्शंस। सो ऑनटू फंक्शंस आर कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, ऑनटू फंक्शंस को ही वी कॉल एट सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और इनटू को क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, नॉट सर्जेक्टिव। एंड वन वन फंक्शन को ही हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, और जो वन वन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, so what we'll do now, we'll just create a summary, let's summarize it. तो ब्रॉडली टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगर हम समरी की बात करें तो चार तरह के फंक्शन होते हैं, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। या तो फंक्शन वन वन ऑन टू होगा या वन वन इन टू होगा, तो हम उसको देखेंगे भी, कि उसका पिक्चर बना के कोशिश करते हैं देखने की कि कैसा बनेगा। इससे हमारा और बढ़िया क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो वन वन ऑन टू में हमने क्या पढ़ा, पहले रिलेशन वन वन होगा और देयर वुड नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट इन सेट पी। ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सो देयर इज नथिंग, सो रिलेशन इज वन वन एंड देयर इज नो एलिमेंट दैट इज लेफ्ट इन सेट बी। वन वन इनटू में क्या होगा, रिलेशन तो वन वन होगा, but there would be some elements left behind in set P. Okay, many one on to, many one on to में क्या होगा, कि रिलेशन तो many one होगा बट सेट बी में कुछ रहेगा नहीं, सो वी कैन से सेट बी में कुछ रहेगा नहीं। सेट बी के एलिमेंट्स देखो, सेट ए के मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। एंड मेनी वन इन टू में रिलेशन तो दिस इज व्हाट द रिलेशन वुड बी। ठीक है, बट देयर वुड बी सम एलिमेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। ओके, देखो, और मुझे इसको मैथमेटिकली अगर लिखना पड़े, सो आई कैन से वन वन ऑन टू इज व्हाट, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। वन वन इन टू इज व्हाट, oh, this is this is injective as well as surjective. This is one one into injective but not surjective. This is not injective but surjective, and this is nothing, not injective, not surjective. ठीक है, सो दिस इज द समरी। ठीक है, सो इससे हमें और आसानी से समझने को मिलेगा। ओके, नाउ अभी हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, सो नाउ what is, if I have to say, what is the mathematical, if I have to write mathematical interpretation of function definition, से पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम हाउ डू वी राइट इट ऑफ फंक्शन। ठीक है, हाउ डू वी एक्चुअली राइट इट। ठीक है,
तो लेट्स से ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा हो गया 1 4 9 16 25, लेट्स से, ठीक है। सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया, ठीक है। सो नाउ अगेन, what this is what our domain is, okay, and this is what our range is. So range को we represent from y, domain को we represent from x. Okay, y represents element of range, x represents element of domain, and above relation जो है we can say y equal to f of x. This is the most standard way of writing a function, y equals to f of x. Function can be written as a relation between two variables. So this is the most efficient way जिसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। So हमने क्या बोला, function can be written, what did I say, कि function can be written as relation between two variables, दो वेरिएबल की बीच की बात, ठीक है। तो can we say then is that every relation is function? Can we say this is every relation of function? ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, ठीक है। अभी तक जो हमने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, दैट वाज मोर और लेस इन थ्योरी. नाउ वील गो अहेड एंड विल सी हाउ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इज फॉर द सेम, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, उसी चीज को जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसी चीज को हम ट्रांसलेट करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो पहले we'll take some questions and then I'll explain you, and then maybe you can take a minute, you can pause the video, then you can do it, and then you can come back and see what actually application is. So let's say y square equals to x square है हमारे पास, y square equals to x है, y equals to x square है, ठीक है। इन तीनों में can you tell me which of these are function? Try yourself, pause, and then you can come back and see how much you understood the concept. Now, before that, let me explain you what is the mathematical representation, what is the mathematical interpretation of being a function. So the simplest way is for each value of x, we should get one y, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 1 2 3 4 लिखा है, 1 4 9 16, so for if I'm taking 1, I'm getting 1 as y. If I'm taking x as 2, I'm getting y as 4. If I'm getting x as 3, I'm getting y as 9. If I'm taking x as 4, y is getting 16, y is 16. So it means that for each value of y, x के एक वैल्यू के लिए हमें एक y मिल रहा है. For each value of x, I should get only one y. If I'm getting more than that, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी तरह से कोई हमें ऐसा मिल जाता है जहां पे मुझे एक x के वैल्यू के लिए मुझे दो y मिल जा रहा है, ठीक है। लेट्स से ए बी सी डी है, मुझे 1 का a भी मिल जा रहा है, 1 का b भी मिल जा रहा है. So what happens then? This is not a function, because the primary requisite for any set to be a function is that all the elements of set A has to be linked with exactly one element of set B. But in this case, if you are getting multiple values, if we take one value of x and we are getting multiple values of y, it then does not fulfill the condition of a function. That's what we studied in the definition. यही पढ़ा था theory में, वही चीज practical में है, ठीक है। So now we'll come back and see इनमें कौन कौन से हैं जो कि function है नहीं है, ठीक है। Now y square equals to x square. अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, इस मीन अगर हम x की कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से हम x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, देन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 भी आ गया, -2 भी आ गया. इट मीन्स फॉर x इक्वल्स टू 2 आई हैव y इक्वल्स टू -2 एंड +2. एक x के लिए दो y, विच इज नॉट अलाउड, सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन. अगेन
अगेन x को मैंने यहाँ पे 4 ले लिया सेकंड केस में, तो y² इक्वल्स टू 4, तो अगेन y इक्वल्स टू कितना हो गया -2 +2 हो गया। अगेन x का मैंने एक वैल्यू लिया बट y के मेरे पास दो वैल्यू आ रहे हैं, इट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। थर्ड केस y इक्वल्स टू x², अगेन मैं x की कोई वैल्यू, लेट्स से x का वैल्यू आई एम टेकिंग इज 2, सो इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2 आई गेट y इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है, अभी यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं आया, सो वी कैन से दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, बहुत बेसिक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है फंक्शन की डेफिनेशन का। एक x की वैल्यू आप लीजिए, आपको एक y की वैल्यू आना चाहिए, अगर ज्यादा आ रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ डेफिनेशन देख के, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख के तो हम पहचान सकते हैं कि is this a function or not, but can, by looking at a graph, let's say I've been given some graph, can we identify a graph? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि ग्राफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलकुलस, सो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम विल चेक ग्राफ फॉर श्योर, so can we identify whether it's a function or not through graph? So let me give you some graph, then I'll explain you how to identify. Okay, hang on. Okay, here are few graphs. I need you to look at them and see how to identify a graph, whether this graph represents a function or not. Okay, okay. So see, what we are going to do, we are going to translate what we studied in theory part, जब हमने literal value of literal definition of function पढ़ा, and then we'll also see that same thing, the mathematical interpretation is applied when we are examining a graph as well. There's nothing that's going to change. Okay, so what we studied in function definition जब हम theory में पढ़ रहे थे कि only those graphs, only those will be called function wherein all the elements of set A is exactly linked to one element of set B. ठीक है, so देखो उसको हम graphical transformation कैसे करते हैं. So draw a vertical line if the vertical line at any part of graph cuts it at more than one point, not a function. It should only cut the graph at one point, only and only at one point. If it is cutting at more than one point, then it is not a function. Okay, चलो चलो बनाते हैं. ठीक है, so let's say at any point we can draw this. There is no such restriction कि हमने यहाँ नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ आप कहीं भी ड्रॉ करो जहां पे आपको लगता है. ठीक है, देखो कि कितनी बार कट कर रहा है. So let's say let me use, okay, at any part if I draw, what do I see? कि it is only cutting at one point. देखो यहीं पे point of intersection है, so I can say this is a function over here. Now at two places, so not a function. ठीक है, again कहीं पे भी हम कट कर सकते हैं, only at one point, so yes this is a function. Again same ग्राफ है बस, तो ये भी फंक्शन है, we can say. इसको कहीं पे भी करके देखते हैं, again this is also a function. इसको करेंगे तो naturally it has two point of intersection, so not a function. ठीक है, so very easy, just draw a horizontal line and we can figure out draw a vertical line and we can figure out if it is a function or not. Now can we also go a step ahead and can we determine if it is a one or many one? Can you do this? Yes. So now draw a horizontal line and if it cuts at 2 points, तो अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब many one हो गया. कट्स एट 1 point इसका मतलब
वर्मन हो गया। अच्छा, अब लोग पूछेंगे कि हॉरिजॉन्टली क्यों वर्टिकली? किसी वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स एक्स, ठीक है। सो एक्स एक्सिस, तो हमने अभी पढ़ा कि एक्स का जो रिश्ता है वाई से वन, एक्स के सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। Therefore, the vertical line should cut only at one point, where the horizontal line it represents y. Now y can be related in two ways. Either it can be one on one with a or x, or y can be related with many one with x. Y मतलब range और x मतलब domain, y मतलब set b, x मतलब set a, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे ना, ऑलवेज हम पहले पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शन है। जो फंक्शन ही नहीं होगा उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन, विल सी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एट 2 पॉइंट। आई कैन से दिस इज मेनी वन, दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस नो पॉइंट चेकिंग हो गया। अगेन एट 1 पॉइंट आई कैन से 1 1 so this is 1 1 function. 2 points, so I can say many one function, and this is not a function, so there's no point checking out. So that's how we can see, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि हमने चलो इतना ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, बट हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन तो ये आएगा ना, क्वेश्चन तो आएगा कि फाइंड डोमेन, रेंज, कोडोमेन। सो कोडोमेन का तो सबसे आसान है, अनलेस गिवन, unless given anything specific in the question, codomain is always R, ठीक है ना। डोमेन का क्या है, देखो लेट्स से डोमेन का कोई एग्जांपल ले ले तो 1/x। तो ओवर हियर हमने क्या देखा डोमेन का, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वी गेट अ रियल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। x की ऐसी सारी वैल्यू, तो देखो x कैन टेक एवरी वैल्यू बट नॉट जीरो, है ना, क्योंकि जीरो लेने के बाद कोई रियल वैल्यू आएगा नहीं y का, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या है, रेंज वो वैल्यूज हैं, रेंज वो सारी वैल्यूज हैं जो हमने x डाला तो हमारा आया। तो रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y that we get by putting all possible values of x in domain, को बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो विल स्टॉप ओवर हियर टुडे। आज हमने फंक्शंस के जो भी प्री रिक्विजिट है हमने वो देखा, अभी फंक्शन को पहचानने का तरीका देखा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। नाउ आगे विल स्टडी फंक्शंस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। सो विल स्टार्ट विद, देयर बेसिकली वी कैन डिवाइड इन टू सेक्शन, one would be algebraic and the second is transcendental, ठीक है। now algebraic में we'll start with algebraic, so we'll start with polynomial function. Polynomial is the basic, very basic thing. Then we'll start fractional, rational फंक्शन। अच्छा, इन सब में हम यही सीखेंगे कि डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है, क्या क्या मैनिपुलेशन है, वो सब देखेंगे। इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, पीस वाइज ना अपने आप में इट्स अ बिग बिग थिंग, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीआईएफ आ जाता है। इसके अंदर जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो मोबाइल वाला जीआईएफ नहीं। एफपीपी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसमें मॉडुलस आ जाता है, इसमें सिग्नम बाबा आ जाते हैं, इसमें मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन जो कि आजकल जेई का बहुत फेवरेट चल रहा है, ठीक है। और इसमें एनसीआर एनपीआर आ जाता है। दिस इज नॉट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जब हम ट्रांसडेंटल में आते हैं तो वही सब, ट्रांसडेंटल में लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आईटीएफ है। So in next class we'll start with polynomial function, and then we'll go on from there. Okay, I hope you enjoyed the video. If you really liked it, please go ahead and subscribe it. It's a free thing for entire JEE. पहले मैथ्स का कोर्स होगा, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का भी कोर्स लोड होगा, और everything will be covered. ऐसा कुछ भी नहीं होगा that will be left behind. So please subscribe it and share it with your friends as well. Thank you for your time. All the best.